Hello bachcho, let's read the question. The question says that a certain molecule has an energy level diagram for its vibrational energy in which two levels are 0.0141 electron volt apart. The wavelength of the emitted line for the molecule as it falls from one of these levels to the other is about. So, key concept हमारा question का क्या हो जाएगा? As we know, key concept will be, it will be like हमें पता है energy is equal to क्या होता है? hc by lambda, Planck's constant hc by lambda, जो हमें पता है HRC की क्या वैल्यूज होती है. तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, टू लेवल्स आर इतना अपार्ट, सो एनर्जी डिफरेंस, बेसिकली एनर्जी डिफरेंस is equal to 0.0141 electron volt, which is equal to 0.0141 into 1.6 into 10 power minus 90. ओके, तो ये हमारा है बेसिकली एनर्जी डिफरेंस. ये हम किस में निकाल रहे हैं? जूल में निकाल रहे हैं. तो ये इफ विल कैलकुलेट व्हाट वी विल गेट, वी विल कैलकुलेट इट लेटर ऑन. सो बेसिकली हमें क्या चाहिए? E is equal to hc by lambda. This implies lambda is equals to hc by E. Yes or no? Yes, definitely. Which is equal to h क्या है हमारा? H is nothing but 6.62 into 10 power minus 34 into C क्या है? 3 into 10 power 8 डिवाइडेड बाय E क्या हो जाएगा हमारा? 0.0141 into 1.6 into 10 power minus 19. तो ये जो आंसर वो हमारा मीटर्स में आएगा if we will calculate this all. But what we will get after calculating all this, lambda is equal to 8.9 into 10 power minus 5. 8.9 into 10 power minus 5 meters. ये हो जाएगा. So basically होगा क्या हमारा, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इन मिलीमीटर और माइक्रोमीटर whatever it is, then what we can write it as 88 या 89, approximately it can be 88, approximately 88 into 10 power minus 6, so 88 micrometer. So final answer for this question will be option number A, 88 micrometer. I hope you understood the concept well. Best of luck.